Hi, you guys. Hope you are doing well. Myself, Ishita Mehra. Today I am discussing about parasympathetic ganglions. Before discussing the parasympathetic ganglions, we need to learn the basic that autonomic nervous system is divided into two parts: parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system consists of both are basically supplied by ganglions. The ganglions of parasympathetic nervous system are present in cranial and sacral region. That's why it's known as craniosacral outflow. And sympathetic nervous system is thoracolumbar region. Also, they are known as thoracolumbar outflow. As you can see, these ganglions altogether control the autonomic nervous system, that is parasympathetic supply and the sympathetic supply of the whole body. These four ganglions, otic, ciliary, submandibular, pterygopalatine ganglions, basically controls the uh, parasympathetic supply along with S1, S2, S3 of the whole body. And in cases of sympathetic nervous system, from T1 to L5, it controls the sympathetic supply of whole body. This controls the parasympathetic supply, blue marked, and the one which is green marked, it controls the sympathetic supply of the whole body. Today we will learn about these four ganglions. Okay, let's write the name of all the ganglions first. Ciliary ganglion, otic ganglion, third one is pterygopalatine ganglion, and fourth one is submandibular ganglion. Submandibular ganglion. Okay, first of all, we will learn the basic structure of any ganglion. So, first I will draw the structure completely, then I'll explain it. Here we go. Okay. Each ganglions have two types of nerves. One is topographic nerve, जिससे वो topographically जुड़ा हुआ है, यानी related है उससे. And one is functional nerve. Functional nerve के through उसको input मिलता है. और वो भी यहाँ पे कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. वो फंक्शनल नर्व के थ्रू ट्रेवल होकर गैंग्लियन तक आता है, उसमें रिले करता है, एंड गैंग्लियन वाया द टोपोग्राफिक नर्व कहा ग्लैंड को सप्लाई कर देता है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई. क्लियर? जो टोपोग्राफिक नर्व होती है वो क्या होगी? ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व ही होती है. दिस इज फिक्स. ठीक है, कोई ना कोई सी ब्रांच ही होगी ट्राइजेमाइनल नर्व की जो की होगी. सो विद दिस मच ऑफ बेसिक, we'll now start with our first ganglion, that is ciliary ganglion. Number one is ciliary ganglion. सबसे पहले हमें ciliary ganglion में ये चीज समझनी है, what is the supply of ciliary ganglion. Ciliary ganglion supplies ciliary, actually it supplies muscles of eye, जिससे या तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या डायलेट होता है. फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन इट सप्लाइज कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली, फॉर डायलेशन इट सप्लाइज डायलेटर प्यूपिली, एंड फॉर अकोमोडेशन इट सप्लाइज सीलियारिस मसल. ओके, फॉर एज वी ऑल नो कि पैरासिम्पैथेटिक का प्यूपिल पे क्या एक्शन होता है? इट बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्ट्स द प्यूपिल, इट मेक्स द प्यूपिल स्मॉल. और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका क्या एक्शन होता है? टू डायलेट द प्यूपिल.
मतलब pupil का action for parasympathetic is to constrict. So we have to supply the constrictor pupillae. Constrictor pupillae को काम करना पड़ेगा. And for sympathetic nervous system, as we all know that pupils dilate, तो dilator pupillae को काम करना पड़ेगा. ठीक है. So जो parasympathetic supply होगी via ciliary ganglions, वो किसको जाएगी? constrictor pupillae को जाएगी. और जो sympathetic supply होगी, this red one is parasympathetic and this green one is sympathetic. तो ग्रीन वन को हम देख पा रहे हैं कि वो डायलेटर प्यूपिली को सप्लाई कर रही है और पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली को सप्लाई कर रही है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती कैसे है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है वाया द थर्ड क्रेनियल नर्व. लेट मी राइट इट ऑल्सो, फर्स्ट एक्सप्लेन इट. Then there is a branch of third cranial nerve, that is nerve to inferior oblique branch of third cranial nerve. Then via the inferior oblique it releases ciliary ganglion, and via the short ciliary nerve or nasociliary nerve, which is the topographic nerve of ciliary ganglion, it supplies the constrictor pupillae muscle. Okay, so first of all it supply, that is ciliary gland, its location, it's present on the apex of the orbit, and its parasympathetic supply को I'll write a flow chart for you जिससे कि easily learn हो जाए. सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. वो थर्ड क्रेनियल नर्व के थ्रू, उसका भी फिर इंफीरियर डिवीजन की एक ब्रांच होती है नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक. नर्व टू इंफीरियर ओब्लिक के थ्रू वो सीधा फिर सीलियरी गैंग्लियन में जाता है. सीलियरी गैंग्लियन के बाद वो वाया शॉर्ट सीलियरी नर्व और नेजोसीलियरी नर्व, वाया शॉर्ट और नेजोसीलियरी नर्व वो किसके supply the dilator, constrictor pupillae. और इसी तरह से पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आ जाता है प्यूपिल पे, दैट इज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. फॉर सिंपैथेटिक सप्लाई द ग्रीन वन इन द डायग्राम, वो T1 से शुरू होता है. देन इट रिलीज इन द सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियंस. हमने थोरैकोलंबर की भी बात की. क्रेनियोसेक्रल इज पैरासिम्पैथेटिक, थोरैकोलंबर इज सिंपैथेटिक. बट होता क्या है, जब भी हेड एंड नेक की सप्लाई होती है तो वो थोरैकोलंबर से शुरू जरूर होती है, बट इट ऑलवेज passes or relay through the superior cervical sympathetic ganglions or any of the cervical sympathetic ganglion. Okay, in all the sympathetic parasympathetic ganglions, it always relays in the superior cervical sympathetic ganglion. Only then it will go to further ganglion and then to the particular gland. For all sympathetic supply, this thing is fixed. So for sympathetic supply from T1, thoracolumbar में इसका ganglion, as we all know, sympathetic का होता है. Then it will go to superior cervical sympathetic ganglion. Then after that, it goes to, then it forms a plexus. So it forms sympathetic plexus around internal carotid artery. Then it via the short ciliary nerves, it goes to dilator pupillae and dilates the pupil. So after this, forming the plexus, it goes to the ganglion, that is the ciliary ganglion. Then it will supply the dilator muscle. Okay, this is here. Next ganglion we are going to discuss is the otic ganglion.
what is there in OT ganglion? First of all, it is topographically related to root of mandibular division of trigeminal nerve. What it is? Root of mandibular division of trigeminal nerve. Mandibular division of trigeminal nerve. Functionally, it is related to glossopharyngeal nerve. As ciliary ganglion is functionally related to third cranial nerve, it is functionally related to ninth cranial nerve. Okay, functional nerve is ninth nerve or glossopharyngeal nerve. ठीक है. Firstly, we will it supply is parotid gland. Okay. So now for parasympathetic supply, it starts in the inferior salivatory nucleus. Then after its travel in glossopharyngeal nerve. Then after the branch of glossopharyngeal nerve is tympanic branch of glossopharyngeal nerve. Then it formed the tympanic plexus. Then it formed there is a branch of tympanic plexus lesser petrosal nerve. Lesser petrosal nerve passes through foramen ovale and relay in ganglion. Then via the auriculotemporal nerve, it supplies the gland. This is the parasympathetic supply of parotid gland via the otic ganglion. So how? Let me write. Inferior salivatory nucleus से शुरू होगा. Then it goes in the ninth nerve यानी कि glossopharyngeal nerve. फिर वहां से जो उसकी tympanic branch होगी वो उसमें जाएगा. Then it forms tympanic plexus. Tympanic plexus बनाने के बाद tympanic plexus की lesser petrosal branch होगी. Lesser petrosal branch otic ganglion foramen ovale से पास होगी and relay in otic ganglion. Otic ganglion में जाने के बाद ये via auriculotemporal nerve सप्लाई दे देगा पैरोटिड ग्लैंड को. ठीक है. नाउ वी विल learn the sympathetic supply. Sympathetic I'm writing over here. जैसे कि हमें पता है it starts in T1 then it goes in superior cervical sympathetic ganglion. जैसे ciliary का हुआ था वैसे ही इसका भी है. Then it forms the sympathetic plexus around medial meningeal artery. तो इसके बाद ये गैंग्लियन में जाती है. फिर गैंग्लियन से ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व के थ्रू ये हमारी पेरोटिड ग्लैंड में चली जाएगी. गॉट इट कंप्लीटली. कैसे होगा इसका फंक्शन? So now I'll write the sympathetic part here. From T1 it will go to superior cervical sympathetic ganglion. Then it forms the plexus around the middle meningeal artery and via the auriculotemporal nerve it goes into the parotid gland. Okay, let me highlight the otic ganglion. ये भी जो otic ganglion. Okay. Now the next ganglion is number 3rd is pterygopalatine ganglion. The supply of pterygopalatine ganglion is so extensive and it supplies basically from the branches of maxillary division of trigeminal nerve के थ्रू ये अपनी पूरी सप्लाई देता है. टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन हम लिख लेते हैं पर टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. सबसे पहले हम देखेंगे that its location.
it is located in pterygopalatine fossa. One more thing, it is the largest parasympathetic, I'm writing PS for parasympathetic ganglion. Okay, it serves as a relay center for the secretomotor fibers to lacrimal gland, mucous glands of nose, palate, pharynx, and paranasal sinuses. Okay, let me write the supply. It is the parasympathetic as well as the sympathetic supply to lacrimal gland, mucous glands of nose, palate, pharynx, and paranasal air sinuses. So now we will understand the parasympathetic supply. So it starts from superior salivatory nucleus. This yellow one is the parasympathetic supply and this green one is the sympathetic. Okay, it starts in the superior salivatory nucleus. It goes in facial nerve and facial nerve की एक branch है greater superficial petrosal nerve, or you can simply remember greater petrosal nerve. It mixed with deep petrosal nerve to form nerve of pterygoid canal. It then relay in the ganglion and supply lacrimal gland, nasal glands, all mucous glands. Okay, so now we light its parasympathetic. So here we go. It starts in superior salivatory nucleus here, then it goes to facial nerve, then facial nerve की एक branch है greater petrosal nerve, like this, greater petrosal nerve पे चला गया, then it mixes with deep petrosal nerve which is a parasympathetic, which is a sympathetic branch of sympathetic plexus around internal carotid artery. This इसकी एक branch है deep petrosal nerve, उसके साथ mix होगा, नर्व ऑफ टेरेगॉइड केनाल बनाएगा जिसे हम वीडियंस नर्व भी कहते हैं, टेरेगॉइड केनाल जिसे हम वीडियंस नर्व भी कहते हैं, और फिर ये गैंग्लियन में जाके चला जाएगा और फिर वाया द ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन ये सप्लाई कर देगा ग्लैंड्स को. I'm not writing again which glands it supply. Branches जो maxillary nerve की हैं उसके through ये supply कर देगा. Now I will write the sympathetic. So firstly, understanding in the diagram. Green nerves in the diagram corresponds to the sympathetic. It starts from T1, goes into the superior cervical sympathetic ganglion. Then it forms a plexus, a sympathetic plexus around internal carotid artery. It gives off a branch that is deep petrosal nerve. Deep petrosal nerve mixes with greater petrosal nerve to form nerve of pterygoid canal, which is also known as Wiedeann's nerve. It relays in the ganglion, then supplies the sympathetic nerve. Same as the parasympathetic. It starts from T1. Then it goes to the superior cervical sympathetic ganglion. Then it forms the sympathetic plexus around internal carotid artery. Then it gives a branch deep petrosal nerve. ये deep petrosal मिक्स होगा ग्रेटर पेट्रोसल नर्व जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, फिर ये दे देगा नर्व ऑफ टेरिगॉइड केनाल एंड फिर ये गैंग्लियन में जाएगा एंड फिर सप्लाई. समझ में आ गया?
कैसे सिस्टम सप्लाई किया? टेरिगोपैलेटाइन इज द लार्जेस्ट गैंग्लियन, ये याद रखना है पॉइंट, इट्स इम्पोर्टेंट. Okay, now we will discuss about the last ganglion, that is the submandibular ganglion. Submandibular ganglion, firstly we will discuss about its supply. It supplies two glands, submandibular gland and sublingual gland. Supply submandibular gland and sublingual gland. Okay, firstly we will understand the parasympathetic part, then sympathetic. It starts from superior salivatory nucleus, then it passes to the facial nerve. फेशियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच? कॉर्डा टिम्पेनाई. कॉर्डा टिम्पेनाई के बाद दिस, देन कॉर्डा टिम्पेनाई. कॉर्डा टिम्पेनाई मिक्स होगी लिंगुअल नर्व के साथ. लिंगुअल नर्व ही उसका बाद में नाम होगा. फिर उसके बाद इट रिले इन सब मैंडिबुलर गैंग्लियन. फिर शॉर्ट लिंगुअल नर्व या शॉर्ट नर्व ऐसे ही give supply to submandibular gland and sublingual gland. Okay, let me write parasympathetic part. Root. Parasympathetic. How is this? It starts from superior salivatory nucleus, then along the facial nerve, it gives to chorda tympani. Chorda tympani mixes with the lingual nerve, then lingual nerve gives to the ganglion, then the ganglion will supply via short branches to submandibular gland and sublingual gland. So now, after reading too much of these ganglions, now we will make a summary table of all the information. So first ganglion we will discuss is the ciliary ganglion. We will first write its location, its functional nerve and its supply. Its location is the apex of orbit. Its functional nerve is third cranial nerve and its supply is ciliary muscles of pupil and ciliaris. Next we will discuss is otic ganglion. Muscle of pupil and ciliaris. Otic ganglion, it is present in infratemporal fossa. ओटिक गैंग्लियन का नर्व है नाइन्थ नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड. थर्ड वन इज टेरिगोपैलेटाइन ganglion. It's present in pterygopalatine fossa. Pterygopalatine fossa and nerves is 7th. For last also nerve is 7th. And it supply the mucous glands of nose, palate, and obviously the lacrimal gland. Please remember that lacrimal gland is supplied by pterygopalatine ganglion, not the ciliary ganglion. Last fourth is submandibular ganglion. It's present in its fossa. Then seventh nerve की यहाँ पे branch होती है gluteal petrosal nerve and here it is chorda tympani.
and its supply is submandibular gland and sublingual gland. Thank you so much for your patience. Hope you understood the lecture. Thank you.